गिर जाएगी नीचे।
जय भीम, नमो बुद्धा। रवि बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो भैया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो भैया जी? कैसे हो आप सब लोग? सिस्टर ठीक हूँ भैया। बच्चों के टिफिन तैयार कर रही हूँ, किचन में हूँ, बना रही हूँ। मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया, थैंक्स। ठीक ही रहना चाहिए। काम पर जा रहा हूँ, अभी ट्रेन में हूँ। अच्छा भैया, काम पे जा रहे हैं? बहुत जल्दी ड्यूटी है आपकी, इसका मतलब।
चाय नाश्ता कुछ किए कि वैसे जा रहे हो? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जाइए काम पर। खाना बना रही हो क्या सिस्टर? हाँ भैया, बच्चे स्कूल जाएंगे ना। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। बच्चों का टिफिन तैयार कर रही हूँ भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया। चाय पी लिया? चलो फास्ट पानी गर्म हो गया, ब्रश व्रश करके। क्या बनाया है? सब्जी बनाया का? सब्जी कौन सी? जय बुधाय पलक दीदी, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है। कैसी हो आप? बेटा बर्तन इतना नहीं खटखटाते, रख दो आराम। जाओ ब्रश करो, रेडी हो। थैंक यू पलक दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी जी हमारी लाइव 9 से चलेगी, आप लोग सपोर्ट करेगा। ठीक है दीदी। कैसे हो पलक सिस्टर जी? जय भीम नमो बुद्धाय पलक सिस्टर जी, बड़े भैया जी बोल रहे हैं पलक दीदी आपको। हम ठीक नहीं हैं भाई जी, हमारी भी तबीयत सही नहीं है। अच्छा पलक दीदी क्या हुआ है?
जय भीम दीदी, जय भीम। क्या हुआ है पलक सिस्टर, अभी भैया पूछ रहे हैं। जय भीम जय भीम जय भीम रमेश बड़े भैया जी, स्वागत है आपका, कैसे हो रमेश भैया? जय भीम, नमो बुद्धाय। रवि भैया बोल रहे हैं, बड़े भैया जी कैसे हो? जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम रवि भैया, गुड मॉर्निंग। भाभी की भी लाइव चालू थी। पलक सिस्टर लाइक कर दो, लाइक को। हाँ मिला रही। बंद कर दो राड, वहां से बंद कर दो बटन। हाँ बेटा, खांसी आ रही है ना, अभी सर पिला दो। वो तो जुकाम हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। धाम में भी खाद डालना है, अच्छा भैया। हाँ आकाश गिरा दिया, कहाँ गिरा दिया आकाश बेटा? ओके रमेश भैया लाइक करती हैं। ओके ओके दीदी, ओके ओके, बाय बाय पलक दीदी, बाय बाय, थैंक यू। गेहूं का भोग खाना है तो आ जाइए रवि भैया, गेहूं का आ जाओ। थैंक यू रमेश भैया, ओके रमेश भैया आऊंगा, छुट्टी पास नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। टाइम नहीं है ज्यादा, 20 मिनट का टाइम है। मैं भी काम पर जा रहा हूँ रमेश भैया, अभी ट्रेन में हूँ। अच्छा भैया,
जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम बहन, सभी परिवार को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सेम टू यू रमेश बड़े भैया जी। हमारे भी तरफ से और हमारे फैमिली की तरफ से आपको, आपके फैमिली को गुड मॉर्निंग। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। ओके भैया, जाइए आराम करो, आराम से। हम लोगों को भाई काम ही करना है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। फैमिली कैसे चलेगी भैया, यही तो जिम्मेवारी होती है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
जय भीम, नमो बुद्धाय। सरला दीदी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ, आप कैसी हो दीदी? आप कैसे हो सरला दीदी? जय भीम, नमो बुद्धाय। गुड मॉर्निंग दीदी। जय भीम दीदी, जय भीम। जय भीम अंगद भैया, मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दीदी जी लाइव के साथ आज का दिन भी अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए शुरुआत करता हूँ। यह आपका भाई अंगद कुमार, महाराष्ट्र, पुणे, भीमा कोरे गांव वाला। दिल से भैया, दिल से आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा सरला दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। आज आपने खूब सोया सरला दीदी। लाइक डन दीदी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी कहाँ तक पहुँचे भैया? अंगद भैया कहाँ तक पहुँचे? चाय नाश्ता हुआ कुछ आपका? आज मैं लाइट चला करके रात में 9 चलाई थी, सो गई हूँ, सुबह 7 उठी हूँ। हाँ दीदी, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, देखे कोई आवाज नहीं आ रही थी। रीना भाभी थी और मैं थी। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ दीदी जी। अभी हम बनारस में चाय पी अच्छा भैया, चाय पी लीजिए, चाय के साथ साथ कुछ नाश्ता भी कर लीजिए। बनारस पहुंच गए हो? थैंक यू सो मच भैया। कुछ खा भी लीजिए भैया। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय अशोक, जय सम्राट। अंगद भैया जी की तरफ से सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, थैंक यू। सरला दीदी, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। गंगा मैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय। रीना भाभी जी, कैसी हो आप? और आप कैसे होंगे भैया जी? अच्छा अंगद भैया, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, सभी लोगों से फोन आ गया था। मैं ठीक हूँ सिस्टर जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ रीना भाभी, मैं भी ठीक हूँ। चाय नाश्ता हुआ आप सभी लोगों का?
चाय नाश्ता नहीं हुआ है अभी। अच्छा भाभी, हम भी तो सुबह बना उना के बच्चों को छोड़ के अभी जस्ट आए हैं। 1 घंटा लगा है आने जाने में स्कूल। ओके भाभी, ओके, थैंक्स, कोई बात नहीं है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। बाय बाय भाभी, बाय बाय। अभी बहुत हुआ हाल चाल और सुख दुख, कुछ ज्ञान की बात हो जाए। सभी भाई बहनों अपने शिक्षा के मुताबिक अपनी बातें संवैधानिक तरीके से रखें और अपनी महान पुरुषों के बारे में ज्ञान दें ताकि अपने भाई बहनों को भी याद हो। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। थैंक्स भैया, बिल्कुल सही बात है। अभी हम भी जा रहे हैं 40 पर छोड़ने बच्चों को। ठीक है दीदी, आप जाओ, छोड़ के आ जाओ। जाओ, छोड़ आओ बच्चों को। आप ही करो भैया, अंगद भैया कुछ बताओ। कुछ बताओ अंगद भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ज्ञान की बातें शुरू करने से पहले भारत के दाता, संविधान निर्माता, नव भाषा के ज्ञानी, 36 डिग्री के वैज्ञानिक, अपनी जात में जन्मे महान पुरुषों को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं। थैंक्स भैया, थैंक्स।
अब मैं जा रही हूँ स्कूल दीदी, आधा घंटा के बाद आऊंगी। पूरा आधा घंटा जाने जाने में लग जाता है दीदी। कोई बात नहीं है सरला दीदी, आप जाओ। ऑन करके जा रही, कोई बात नहीं है, आप जाओ, बच्चों को पहले छोड़ के आओ। जाओ दीदी, बच्चों को पहले छोड़ के आओ, जाओ आप। बाबा साहब जी 5 वर्ष के थे तो शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत की और 1917 में महाराष्ट्र के शासकीय में अंग्रेजी भाषा प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जानकारी देने के लिए।
बाबा साहब जी ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए दो बार लंदन गए, मुख्य रूप से 1920 से 1923 के दौरान लंदन, इंग्लैंड में रहे, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE शिक्षा प्राप्त की। थैंक यू भैया, थैंक यू बताने के लिए।
और अर्थशास्त्र डायरेक्ट डीएससी और ग्रेज इनसे ब्लिस्टर हेटला कानून की डिग्री पूरी की है। दीदी जी, यह बात उन सब लोगों को बताना चाहिए जिसके दिमाग में बैठे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। आप बोलो, मैं आपकी बातें ही देख रही हूँ, समझ भी रही हूँ। अच्छा भी लगता है बहुत। बाबा साहब सी से एक डिबिया वाला रात को इंटरव्यू लेने गया। बोला, अम्बेडकर जी अभी जाग रहे हो? बाबा साहब जी बोले, हमारा समाज सो रहा है, तभी हम जाग रहे हैं। यदि हम सोऊंगा तो हमेशा के लिए हमारा समाज सो जाएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। हमारा समाज तो अभी भी सो रहा है भैया, अभी भी सो ही रहा है।
बाबा साहब जी ने हम लोगों के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए थे, और वह माँ पर क्या बीती होगी जिसने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देगी होगी। माता रमाबाई अम्बेडकर के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, सदैव हमेशा रहेगा। बाबा साहब को यहाँ तक पहुँचाने और लाने में माता रमाबाई की भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है भैया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत कठिनाई झेला है अपनी ज़िंदगी में। बाबा साहब जी ने नीला रंग समानता का रंग देके चले गए। आज हमारे को मजाक बना के रखे हैं। बाबा साहब जी ने नारा भी दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। सही बोल रहे हो भैया जी आप, बिल्कुल राइट।
आज हम लोग शिक्षित तो हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे लोगों को 5 किलो अनाज मिल जाता है। चुनाव आने से पहले दारू भी मिलना शुरू हो जाता। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल 100%, बिल्कुल परफेक्ट आप बोल रहे हो। शिक्षित कुछ लोग हो रहे हैं अपने समाज में। अभी अंगद भैया आशा आपको नहीं एहसास होता है, जो लोग शिक्षित होते हैं फिर जैसे कामयाबियां प्राप्त कर लेते हैं तो वो पीछे मुड़ के देखते नहीं है कि हमारा समाज कहाँ है। वो अपने ही तक रखते हैं। बहुत ऐसे हैं, सब नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो देखा गया है, वो अपने ही को नहीं देखना पसंद करते हैं फिर। और जो वैसे हैं वो तो अभी पीने खाने में मस्त हैं, भविष्य के बारे में कोई टेंशन नहीं है कि आने वाला समय क्या हो सकता है बच्चों के लिए। बिल्कुल राइट भैया जी। बिल्कुल एकदम राइट अंगद भैया जी आप बोल रहे हैं। दीदी जी मैं मानता हूँ जो शिक्षित हैं अपने कामयाबी देख रहे हैं, पर जो अत्याचार हो रहा है अपने भाई और बहनों पर, माताओं पर, यही अत्याचार उन लोगों पर होगा तो कौन याद आएगा। इसके लिए समाज को भी देखना पड़ता है। आपकी बात राइट है भैया, लेकिन समझते नहीं है ना। जब तक इंसान नहीं गाता, जब तक खुद के सिर पे नहीं पड़ता है ना, तब तक याद नहीं आता है कि दुख दर्द क्या होता है।
दीदी जी हम इतना फालतू नहीं हैं, आपको पता होगा। आज 3 दिन हमें अपने माँ के हाथों की रोटी खाए, आज 4 दिन हो गया, फिर भी हम अभी तक घर नहीं गया। इतना करने के बावजूद हमारे लोग नहीं समझ रहे। वही चीज तो कह रही हूँ भैया, हमारे कुछ भाई उभर के आए हैं जो सामने इतना संघर्ष कर रहे हैं। अगर उनके साथ आगे नहीं चल सकते, अगर पीछे भी कंधा लगा के सहारा बना के चलते ना, तो भी ऐसा स्थिति नहीं आती। अगर थोड़ा बहुत जागरूक होते तो भी ऐसी हालत नहीं होती। कम से कम नहीं कुछ लायक है, भावना को समझे, अपने अंदर थोड़ा सा सुधार कर सके। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत हमारे समाज के भाई बहन हैं, बिल्कुल ना अपना स्वास्थ्य देखते हैं, ना अपना परिवार देखते हैं, समाज के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे पहले सोशल मीडिया को हम लोग धन्यवाद करते हैं भैया कि सोशल मीडिया जब से आई तब से हमारे समाज में थोड़ी बहुत जागरूकता जरूर आई है। थोड़ी बहुत क्या, पहले से ज्यादा आई, अधिकांश से ज्यादा। नहीं तो हम लोगों को आवाज कौन दिखाता था, कभी कोई दिखाता था? बहुत भाई बहन हैं, बस एक दूसरे के ऐसे सुन समझ के जरूर सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। होगा भैया, इतना उम्मीद तो है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बैग कोई चीजें नहीं होगी अब, होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जरूर होगा। अब जितने लोग हैं ये अंधविश्वासी दलदल में फंसे हैं ना, इनको निकलने में टाइम लगेगा भैया। आज भी सत्ता में बैठे सरकार शपथ लेते हैं तो पार्लियामेंट में संविधान की कसम खाते हैं। पर वह भी संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अभी भी बहुत अत्याचार हो रहा हमारे माताओं पर, बहनों पर, भाइयों पर, पिछड़े वर्ग पर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये सब देख के चीजें तो कभी कभी बहुत ज्यादा रोना भी आता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बट क्या करे, सिमट के रह जाते हैं हम लोग। वो तो शपथ एक दिखावा के लिए होता है भैया, उस शपथ पे चल के कार्य कौन कर रहा है? उस समाज को एक गुमराह करने का काम करते हैं, बस दिखावा करते हैं, बाकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ऐसे कसम तो रोज खाते हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या होता है? कुछ होता है बाद में? कुछ भी नहीं होता।
थैंक यू शर्ला दीदी। आ गई आप। कल हमारे से 65 साल के ताऊ जी मिले और अपनी बातें रखते रखते रोने लगे। बोल रहे थे कि हमारे को सताया जा रहा है पंडित द्वारा। उस बाप पर क्या बीती होगी जिसने समाज में अपने आंसू निकाल कर बातें कर रहे थे। बिल्कुल अंगद भैया, बिल्कुल। बहुत ऐसे हमारे समाज में, अभी गांव के एरिया में जाओ, देखो बहुत लोग ऐसे प्रताड़ित होते हैं भैया, जो दब के बातें रह जाती, सामने नहीं आती है। बहुत ऐसे भाई बहन बहुत ज्यादा दुखी हैं। बाय बाय सरला दीदी, बाय बाय। पूरा हो गया दीदी। ओके दीदी, बाय बाय, थैंक्स। बाय बाय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय दीदी। हाँ दीदी, सुबह सुबह काम होता है, काम कर लो। मेरे बच्चे तो चले गए तीनों, मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। मैं क्योंकि काम सारा अपना निपटा चुकी हूँ। थोड़ा बहुत है कपड़े वाला काम, तो दोपहर में कर लूंगी। मेरा काम सुबह ही ज्यादा होता है, जब बच्चे चले जाते हैं तो फ्री हो जाती हूँ। दीदी जी, अपने लोग जब समाज में आंसू गिराकर बातें करते हैं ना, अपना न्याय मांगते हैं, तो बहुत दुख होता है दिल में। बिल्कुल भैया, बहुत दुख होता है। न्याय मांगते हैं तो भी वैसे प्रताड़ित होते हैं, तो भी भटकते हैं, गुहार लगाते हैं न्याय के लिए, उनको कुछ नहीं मिलता भैया। और न डंडे पड़ते हैं, भगा दिए जाते हैं। हर तरीके से देखो प्रताड़ित होते हैं, चाहे जैसे देखा जाए। लेकिन सोच नहीं बदलते हैं ना भैया। उनको ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना अधिकार, इतना सब कुछ दे के गए हैं, फिर भी हम कितना भटक रहे हैं। आज शायद ये चीजें नहीं होती तो हमारी स्थिति क्या होती, हम कहाँ होते। अगर यही सब बातें माइंड में रख के करें ना, तो जरूर कुछ कुछ ना सुधार हो सकता है। हाँ दीदी, मैं जा रही हूँ काम करने। ओके दीदी, बाय बाय। शर्ला दीदी, बाय बाय, थैंक्स। काम कर लीजिए दीदी। आज इतने भाई बहन हमारे हैं जो पढ़ लिख के अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। एक चीज को न्याय दिलाने में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और सभी लोगों के बीच में बाबा साहब अकेले थे। उन्होंने कितना जुर्म सहा होगा, सबको कैसे अकेले सबको न्याय दिला के गए। उनके साथ तो कोई भी नहीं था।
दीदी जी नहीं सोचेंगे, यही सब सोचते तो अभी तक यूजीसी कानून लागू हो गया होगा। होता इतना हम लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। बिल्कुल भैया बिल्कुल। बात बिल्कुल राइट है। अपने महान पुरुषों के बारे में लोग उनके जन्मदिन पर एक स्टोरी लगाएंगे और उनके मृत्यु वाले दिन एक स्टोरी लगाएंगे, बाकी दिन भूल जाएंगे हमारे महान पुरुषों ने क्या क्या किया। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी बात राइट है। बात बिल्कुल राइट है। जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। अनिल बड़े भैया जी स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बिल्कुल राइट भैया। सिर्फ एक अम्बेडकरवादी का झंडा फहराने से नहीं होगा, उन विचारों को अपनाने से होगा अंगद भैया। जब तक सभी लोग उस विचारों को अपनाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सब बढ़िया है, सब बढ़िया है अनिल भैया। आप बताओ आप कैसे हैं और आपका खाना पीना हुआ? अभी नहीं हुआ है। अच्छा भैया। नमो बुद्धा भैया। दीदी जी आप पहाड़िया मंडी जानती हैं? हम वहां पर पहुंच गया हूँ। अच्छा भैया, आराम से जाइएगा भैया रास्ते में। हम तो सोचे अभी बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं।
हम यही सोच रहे थे अंगद भैया कि अभी बैठे ही हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है अंगद भैया आपसे बात करके, बहुत ही ज्यादा। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय अनिल बड़े भैया जी। दीदी जी, हम जानता था कि आप सही सोचती होंगी, इसलिए आपको याद दिला दिया। दीदी जी, इतना टाइम ले हम चाय पियेंगे तो हम संघर्ष नहीं कर नहीं, कभी कभी होता है भैया ना कि मतलब सफर करते करते और गाड़ियां चलाते हुए इंसान थक जाता है, तो रेस्ट भी जरूरी है। कंटिन्यू चलेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो हम यही सोच के, क्योंकि आप भी लोग जा भी रहे हो अपने ही साधन से, तो ऐसा होता है, इसलिए सोची भैया। बाकी वैसी बात नहीं, मुझे पता है, मुझे इतना पता है कि हमारे भाई लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। चार लोग हैं। अच्छा भैया, थैंक यू थैंक यू। अकेले जाना भी नहीं कहीं, साथ में एक दो लोग हो तभी जाना चाहिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय अनिल बड़े भैया जी। ओके भैया, आप सावधानी से जाइएगा। थैंक यू सो मच। आपको पता है दीदी जी, आपके आजमगढ़ के तरवा थाना वाला कांड जब हुआ था, जब हमारे लोगों ने प्रशासन की गाड़ी तोड़ दिया था। आजमगढ़ में भी बहुत ज्यादा ऐसे कांड होते हैं भैया, आए दिन हमेशा ही होते हैं। कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्या करे भैया, परेशान हो जाते हैं जब, तभी कोई गलत कदम उठाना पड़ता है।
दीदी जी दिल्ली से किधर रहती हैं आप? हम भूल गया। द्वारका भैया, द्वारका में रहते हैं, उत्तम नगर द्वारका, आपने नाम सुना होगा। द्वारका रहते हैं भैया। पहले तो हम लोग राष्ट्रपति भवन रहते थे, जब पापा रिटायरमेंट हो गए हैं तो आ गए सब अपने मकान में। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। उत्तम नगर द्वारका जानता हूँ दीदी जी। हाँ भैया, हम वहीं रहते हैं। आप कभी आना तो जरूर आना भैया मेरे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ। अंगद भैया, एक बार हमने वॉलमार्ट से बस से गए थे द्वारका। हाँ भैया, बस मेट्रो सब चीज की सुविधा है। आप जब कभी आइएगा तो आइएगा भैया, अंगद भैया बताइएगा आप। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। आपकी इधर से बदरपुर बॉर्डर कितना दूर है दीदी जी? बदरपुर बॉर्डर हमारे यहाँ से 1.5 घंटे का सफर है मेट्रो से। नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। आजकल आजमगढ़ वाले अपने को रंगदार बन रहे हैं दीदी जी, आप भी वहीं से हो ना? बात आपकी राइट है भैया, अंगद भैया। हूँ तो इससे नहीं मतलब है।
आपकी बात राइट है, जो चीज सच्चाई है वो सच्चाई है। अंगद भैया आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। नमो बुधाय, नमो बुधाय। अनिल बड़े भैया जी नमो बुधाय। बहुत ज्यादा अत्याचार होता है भैया, आजमगढ़ में भी बहुत ज्यादा होता है। हम लोग जहाँ रहते हैं गांव में, हमारे आसपास में ऐसा नहीं है। आजमगढ़ मार्केट के साइड ही ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, सुनने में आता है। बट हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी बात नहीं है। नमो बुधाय, नमो बुधाय, नमो बुधाय भैया। ऑन हूँ। ओके भैया, कोई बात नहीं है। नमो बुधाय, नमो बुधाय भैया, नमो बुधाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम भैया, जय भीम। नमो बुधाय बड़े भैया जी, जय भीम। दीदी जी कॉल आ गया था। अच्छा भैया, हम तो सोचे गए हम।
कोई बात नहीं है भैया, ऑन है। ओके बड़े भैया जी, थैंक्स। दीदी जी आपका चाय नाश्ता हुआ कि नहीं दीदी जी? नहीं भैया, मैंने नाश्ता तो अभी नहीं, चाय वो पी ली है, अभी करेंगे भैया। सुबह चाय पी थी बस। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती है ना, वो आते हैं, नहाते हो आते हैं, फिर उसके बाद ही तब हम लोग साथ में करते हैं, उन्हीं का वेट करती हूँ। तो अभी वो आए हैं, अपना नहा वहा रहे हैं, फिर तब करेंगे सब लोग साथ में। नमो बुद्धाय भैया, बड़े भैया जी। धरती पर जन्मी नारी हमारी माँ और बहन और बेटी है, और हम लोगों को अपने माँ बहन बेटी की न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना बीते दिन हमारे घर में भी अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। अंगद भैया, ये सोच बस आपकी मुझे दिखती है, सबकी सोच नहीं दिखती है। आज के भाई बहुत ऐसे हैं ना, स्वार्थ बस चलते हैं, बहनों को नहीं पहचानते हैं भैया, कौन है क्या है कैसी है। शब्द ऐसे यूज करेंगे ना, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है अपने ही समाज के। मैं सच बोल रही हूँ भैया, मैं इतने दिन से लाइव चला रही हूँ, मैं देखती हूँ उनको बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। शब्द का चुनाव ऐसे रखते हैं ना कि पढ़ने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है।
दीदी जी आप किसी के लाइव में जाना पूछ लेना कि अंगद कुमार महाराष्ट्र पुणे भीमा कोरेगांव वाला भाई कैसे, आप चले जाना रोमा दीदी जी के लाइव में और रुस्तम दीदी की और रमेश अंकल की और अजय भाई की सत्यवती दीदी की। भैया मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इंसान का एक क्या होता है ना, पहचान अलग ही होती है, समझे। पूछता है उस पे उसको इंसान जिस पे भरोसा नहीं होता है, जिसको संदिग्ध होता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है आपके प्रति कि मैं किसी से पूछने जाऊं। मैं तो आपकी तारीफ क्या करूं, किसी के सामने किसी की तारीफ ऐसे कैसे करूं। बट मैं अपने मन में ही जानती हूँ आप क्या हो, मैं समझती हूँ उस भावना को। नमो बुद्धाय भैया, बस यही कर सकती हूँ, सबसे आग्रह कर सकती हूँ अपने सभी समाज के भाइयों से ऐसे विचारधारा सभी लोग अपनाएं। अब मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती, किसी के लाइव में जाती हूँ भैया। हाँ मैं गई किसी के लाइव में, सपोर्ट करके चली आए, बट जिसके विचार अच्छे होते हैं ना, मैं उससे जरूर बोल के आती हूँ। नहीं तो वैसे मैं किसी से नहीं बोलती हूँ। मैं भी अजय भैया के लाइव में बहुत पहले से जा रही हूँ, आज से नहीं। बट शायद मेरे हिसाब से आप 2-3 महीने से जा रहे होंगे। जब से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तब से मैं बहुत कम जाती हूँ। नहीं तो पहले बहुत जाती थी भैया के लाइव में। मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा था, सबसे पहले मैंने अंकल के लाइव में ही आपको देखा भैया। दीदी जी संस्कार और स्वाभिमान सम्मान यह सब हमारे माता पिता जी का देन है, जिसे हम भगवान मानते हैं। बिल्कुल राइट भैया, देखो माता पिता की देन होती है, बट उस चीज को हम जब तक फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होती है। उसमें आपका भी रोल है भैया। सबको कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, माँ बाप सब देते हैं भैया। बच्चों पे डिपेंड करता है वो संस्कार ग्रहण करते हैं कि क्या करते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम अनिल बड़े भैया जी। जी दीदी जी यह बात आपकी सच है। बिल्कुल भैया, मेरे हिसाब से आप लोगों के हिसाब से क्या है। नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। मैं सच बताऊं अंगद भैया, इसी सब बातों से लेकर मेरे कितने अपनी समाज के भाई बहन हैं जो मेरी नहीं बनती है। मैं सच बताऊं, मेरे समाज के भाई बहन जो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि मुझे उल्टी सीधी बात की किसी चीज की पसंद नहीं आती, इसलिए मैं उन्हीं लोगों को पसंद करती हूँ जो अच्छी बातें बोलते हैं, जिनके अच्छे स्वभाव अच्छे संस्कार, उन्हीं को मैं बस फॉलो करती हूँ। मैं ज्यादा किसी को भाव नहीं देती हूँ, इसलिए लोग मुझसे जलते हैं। मैं किसी की उल्टी सीधी बात पहली बार सुनना पसंद नहीं करती भैया।
हमारी पार्टी ने एक अम्बेडकर भवन बना रही है अहमदाबाद में, जिसने हमने गया था। एक बिहारी भाई से बोला कि भाई क्यों पढ़ाई नहीं किए। लड़का बोला कि भैया जी हमने बचपन से घर छोड़ दिया, माँ बाप की बातें नहीं सुनी। यही होता है ना भैया। माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर हाथ मल के रह जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। अब माँ बाप जब सही दिशा दिखाते हैं बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, उनको कड़वा लगता है माँ बाप क्या बोल रहे हैं। जय भीम जय भीम जय भीम सरोज दीदी, मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। दीदी हम भी देखता हूँ अपने कुछ ऐसे लोगों की जो पढ़ाई किए हैं फिर भी आज मजदूरी कर रहे हैं और शिक्षित होने के बावजूद भी ड्रिंक करते हैं। बिल्कुल भैया 100%। ये चीज मैं लाइव चल रही नहीं बोल पाती हूँ, मैं सच में देखती हूँ हमारे समाज में। अभी मेरी बात आप बुरी मानेंगे कि बहन बोल रही हैं, नहीं बोलना चाहिए भैया बट बोल रही हूँ। अपने समाज में अभी 14 अप्रैल हुआ, कुछ हुआ, बाबा साहब के जुलूस निकालेंगे, बहुत हमारे भाई ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं। ये किस नाम का अम्बेडकरवादी हुआ भैया? सिर्फ नीला झंडा लेके मस्ती में घूमने का कि विचारों को फॉलो करने का? शिक्षित है वो भी कर रहे हैं, जो अशिक्षित है वो भी कर रहे हैं। जय भीम दीदी जय भीम। ड्रिंक बहुत लोग करते हैं। सौ में से 15% लोग ऐसे होंगे जो नहीं करते हैं और 85% लोग ऐसे हैं जो करते हैं। जी दीदी जी हमने अपनी आंखों से देखा हूँ, आपकी बात सही है।
यही बातों पर हम खुद अपने लोगों को जेल भेजा था। आज भी वह लोग हमारे से नफरत करता, पूरे परिवार के सहित। हाँ बोलो। हाँ, यही बात है भैया। मैं सच में, मुझे भी बहुत नफरत होती है, बहुत गुस्सा भी आता है। मुझे भी इस बात से बहुत गुस्सा आती है। जब देखती हूँ ना तो मैं भी एकदम क्रोध हो जाती हूँ, बट क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं होती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये सब चीजें। खाने को रहे, घर में ना रहे, बीवी बच्चे खा पी रहे हैं कि नहीं, लेकिन उनको चाहिए। ऐसे लोग हैं बहुत लोगों के घरों में, मैंने देखा है, पास पड़ोस के घरों में भी ऐसे देखा है। 200 का काम नहीं करेंगे तो 100 रुपया उनको अकेले चाहिए, और 100 रुपये में बीवी को बोलेंगे पूरे परिवार को खिलाओ। ऐसे लोग हैं। ये सब कहाँ जाएगा भैया। थैंक यू सरोज दीदी, थैंक यू सो मच। आज के डेट में अभी शिक्षा मंत्रालय में जाके देखो, उतना नहीं मिलेंगे जितना दारू ठेके पर मिलेंगे। बिल्कुल 100% बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल भैया। इसी से तो वंचित रह रहे हैं ना सभी लोग। इसी वजह, कारण मुख्य यही है। सबसे मुख्य कारण यही है भैया। और लोगों का क्या, और लोग तो सोचते हैं कि हमारे समाज को शिक्षा ना मिल पाए। देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल छोटे छोटे जितने थे, हमारे कास्ट के जितने बच्चे पढ़ लिख रहे थे, जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है प्राइवेट पढ़ाने में, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो सारे स्कूल बंद कर दिए गए। वो बच्चों का भविष्य क्या है। तो यही सब हो रहा है। पेरेंट्स भी उसमें गलती कर रहे हैं, जो शिक्षित है वो भी कर रहे हैं। तो कैसे विकास होगा भैया। अगर कोई समझाए बोले भी तो उससे भी बदतमीजी करने लग जाते हैं। कितने पढ़े लिखे हो, इतने सक्षम हो, मैडम हो, सर हो, लगते हैं बोलने, फिर क्या फायदा है ऐसे लोगों से। सारी कमियां अपनों में ही भैया है। उसकी सब्जी क्या कर रही थी।
हम सेदपुर में पहुंच रहे हैं, 1 घंटे और लगेगा। अपने भाई और अपने बहन माताओं पीड़ित परिजनों से मुलाकात और संवैधानिक तरीके से अपनी न्याय मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी। जय भीम सरोज दीदी, जय भीम। ये सिर्फ पालक है, टमाटर है। दीदी जी, पहले सन 2006 में हम लोगों ने भी गरीबी झेली है। हमने अपनी पढ़ाई करने के लिए सब्जी भी बेचा हूँ। महाराष्ट्र में आज मेहनत सफलता हुआ। हमारा भाई आर्मी में, हम समाज सेवक, पापा जी बीटीसी प्रत्याशी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भैया, जो संघर्ष करता, जो मुसीबत झेलता, वही आगे बढ़ता है। जिसको सुख चैन से सारी चीजें मिल जाती है भैया ना, फिर इंसान वो वहीं तक सिमट जाता है, उसकी सोच बस वहीं तक रह जाती है। आगे बढ़ने वाला जो भी इंसान है, सबसे पहले वो अपनी मजबूरी झेला होता, वही आगे बढ़ता है। सब नहीं हो पाते हैं। जो परिस्थिति को समझता है, सक्षम वही हो पाता है अपने जीवन में। तभी से जान गया हूँ दीदी जी कि संघर्ष करने वाले के सामने मंजिल भी घुटने टेक देती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। वही तो मैं भी सोचती हूँ। मेरी भी ऐसी इच्छा थी भैया कि हम लोग भी पढ़े, बट क्या करें, आपको पता गांव का माहौल ऐसा खराब है ना
कि पेरेंट्स ज्यादातर लड़कियों को छूट नहीं देते हैं कि पढ़े लिखे, बस घर के आसपास में जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं बस पढ़ा दिए पढ़ा दिए। अब तो सब मतलब समझदारी सबके अंदर आ गई है। हम लोग भी इसीलिए शिक्षा से वंचित रह गए हैं भैया, बट क्या करें, जितना समझ में आता है उतनी कोशिश करते हैं। थैंक यू सरोज दीदी, थैंक यू। बाय बाय भैया, बाय बाय अनिल बड़े भैया जी, बाय बाय। इसलिए दीदी जी हमने अपनी गरीबी देखा और आज अपने लोगों को गरीबी में नहीं देखना चाहते, इसलिए हमने अपने समाज सेवक बन गया दीदी जी। जो गरीबी झेला हुआ जानेगा गरीबों का दर्द। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपकी बात बिल्कुल राइट है। जो गरीबी झेला, जो जिस परिस्थितियों से गुजरता है उसका अंदाजा वही लगा सकता है, बाकी सब लोग नहीं। बिल्कुल राइट है भैया, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जय भीम सरोज दीदी, जय भीम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलो आजमगढ़ में न लालगंज, खरियानी, तरवा, बहोरीपुर, देवकली। हाँ भैया, ऐसे सबको लेते चलो। सही बात है भैया, हम लोग भी सोचते हैं गांव जाने का, बट क्या करें, नसीब नहीं हो पाता है।
थैंक यू सरोज दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी जी चलता हूँ, कॉल आ रहा, फिर मिलता हूँ बात करके। ओके भैया, अंगद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बात कर लीजिए आप। थैंक यू सरोज दीदी, थैंक यू।
थैंक यू सरोज दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। जय भीम जय भीम जय भीम दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आ गया दीदी जी, उसी अंदाज में पूरा शहर जानता है हमारे बारे में। जिगरा चाहिए पावर को हाथ लगाने। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किस चीज की आवाज आ रही है दीदी जी? किस चीज की आवाज? घड़ी की आ रही है भैया, घड़ी की आवाज आ रही है, कमरे में घड़ी लगी है ना। अच्छा, फोन चला रही थी, टाइपिंग कर रही थी, उसकी आवाज आ रही थी क्या भैया? हमें लग रहा है फिर उसी की आवाज आपको सुनाई दे रही थी, टाइपिंग कर रही थी, ऐसा ना?
दीदी जी 2 साल पीएचडी किया हो ना भैया? किया हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं किया हूँ। बिल्कुल राइट भैया, आप तो पीएचडी किए, हम लोग तो कुछ भी नहीं। हम लोग तो कुछ भी नहीं, ऐसा नसीब नहीं हुआ। अच्छी बात है ना भैया, आपको मौका मिला, आप उस चीज को किए। लड़कियों को क्यों नहीं मिलता भैया बताओ? गांव का माहौल अभी वैसा ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पढ़ाई की हो तभी तो आज आप अपने समाज को भविष्य उज्जवल कर रहे हो, नहीं तो ऐसे थोड़ी आसान है करना। जो रिस्क का काम आप कर रहे हो सबके बस की थोड़ी है। जय भीम सरोज दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी जी, सबको मिलता है, बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए। एक आपके सामने वाली घड़ी वह दूसरों की होगी और समय आप बिल्कुल राइट भैया, बात तो सही है। बात बिल्कुल सही है भैया। जय भीम सरोज दीदी। जय भीम दीदी, जय भीम। जी जिसने प्रशासन की मार खाई वो फिर भी वह इंसान समाज को सुधारने में लगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट है। बहुत हमारे भाई बहन समाज को जगाने के लिए जेल खटे हैं, मार खाए हैं, डंडे खाए हैं। हम लोग भी न्यूज देखते हैं तो बहुत तरस आता है। जय भीम दीदी, जय भीम। एक जो कि बिना गलती की न्याय मांगने के लिए हमारे भाई कितने मार खाते हैं। बाय बाय सरोज दीदी, बाय बाय।
बाय बाय सरोज दीदी। दीदी जी, हमने संवैधानिक तरीके से महाराष्ट्र में 2 लोगों को सस्पेंड करवाए थे, संविधान के पावर से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल संविधान के पावर के साथ-साथ आपकी भी पावर रही तभी। अगर आप भी पढ़े-लिखे सक्षम नहीं होते तो शायद ये संभव नहीं होता। बिल्कुल अच्छी बात है भैया। ऐसे अपने समाज को न्याय दिलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल राइट। दीदी जी, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में लोग शिक्षित नहीं हैं, उतना शिक्षित तो हैं, पर शिक्षा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, सही बात है। फिर वो शिक्षा का क्या ही महत्व भैया, जब वो कहीं अच्छी जगह यूज ना हो। उस वैसे शिक्षित होना क्या फायदा। वीरों के धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, स्वागत है। बट क्या करें, उत्तर प्रदेश से बाहर आ गए हैं।
दीदी जी, वीरों की धरती शहीदों की धरती मानी जाती है गाजीपुर। हमने गाजीपुर का इतिहास पढ़ा है। ओके भैया। हमको भी बताना भैया, गाजीपुर में ऐसा क्या हुआ था? जय भीम, नमो बुद्धाय दीदी जी। शिवा सिस्टर्स मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसी हो बहन आप? अंगद भैया बताइए, हमको भी कुछ बताइए। लाइक डन। खाना पीना हो गया आपका? नहीं सिस्टर, अभी कुछ नहीं हुआ। आप बताओ, आपका हुआ? आपका हुआ बहन? खेत में हूँ दीदी जी, सरसों काटने आई हूँ। ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बहन, सीमा बहन, सपोर्ट का टेंशन छोड़ दो। काम सबसे ज़रूरी है, अपना पहले काम करो। काम कर लो बहन। मुझे पता है आपको खेती बाड़ी का काम ज़्यादा करना पड़ जाता है। अभी नहीं हुआ है। अच्छा सिस्टर। टाइम से कुछ चाय नाश्ता कर लेना चाहिए था ना बहन। अब खेत में काम करोगी कब आओगी? वेरी खाना है, अच्छा। जुकाम नहीं होगा? गांव में देसी है ना। जिला गाजीपुर वीरों की धरती इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की युवाओं ने भारतीय सेना से सेना करने का इतिहास जज्बा। हाँ सही बात है भैया, ये चीज़ तो हमको, हम सोचे कोई और कोई ऐसी बात ही हुई हो। बिल्कुल भैया बिल्कुल, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, मतलब गाजीपुर ज़्यादातर सेना में बहुत ऐसे हमारे भाई बहन हैं, बहुत ज़्यादा तरह से जज्बा रखते हैं, और बेचारे कितने लोग शहीद भी हो गए हैं। एक दीदी आई हैं साथ में काटने, एक दीदी हैं घर पर बना रही हैं खाना। अच्छा सिस्टर। चाय नाश्ता हो गया? मेरे यहाँ बहुत होती है। हाँ सिस्टर, गांव में पहले हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, पढ़ने जाते थे ना, रास्ते वास्ते में जहाँ पड़ता था तोड़ ओड़ लेते थे। गांव में होती हैं, ऐसे भी होती हैं। उसको लगाता कौन है, पर हो गई है, पहले की जो पेड़ हैं वो पड़ी हुई हैं ऐसे। स्कूल से छूटते थे पहले उसी पेड़ के नीचे जाते थे। गाजीपुर वीरों की धरती।
थैंक्स सिस्टर, थैंक्स। और इस मिट्टी ने परिवार चक्र विजेता कंपनी क्वारंटर मास्टर अब्दुल हमीद जैसे महान सपूतों को जन्म दिए। ओके भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ओके दीदी, बाय बाय, मैं जा रही हूँ, जल्दी से काट कर जाऊँ घर, धूप भी बहुत तेज लग रही है। कोई बात नहीं है सिस्टर, बाय बाय, आप काम कर लो। मैं भी लाइव एंड कर दी होती, बट भैया से बात करके अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बात ही कर रही थी अभी। दीदी जी, जिला गाजीपुर का भी इतिहास है, एक बार पढ़ो, तब पता चलेगा कि हमारे लोग कितना शहीद हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल पढ़ेंगे, आपने बता दिया ना, बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं मौन धारण किया हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई, स्वागत है आपका। कहाँ थे आप सुबह से? मौन क्यों धारण किए हो? कॉलेज में हो क्या भाई, बताना। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी, आपको भी भाई। आप कैसे हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? आपका खाना पीना हो गया दीदी? अभी नहीं भाई, खाना पीना अभी नहीं हुआ है। आपको पता है खाना पीना 2:30 बजे से पहले नहीं। चाय नाश्ता कर लिए हैं, अब बच्चे आएंगे 2:30 बजे स्कूल से, तब सब लोग खाएंगे। आपका हुआ भाई, बताओ। आपका हुआ भारती भाई? मैं आज रूम पर हूँ दीदी। अच्छा भाई, सोए थे क्या? सोए थे? मैं तो सोचूं भारती भाई नाराज हो गए हैं क्या, कल नहीं आए। अभी नहीं हुआ है दीदी। अच्छा, अभी सो के उठ रहे हो क्या भाई? तब तो अभी बनाओगे फिर करोगे। मैं आर डीलर के पास राशन लेने गए थे। अच्छा, राशन मिलता है?
राशन मिलता है भाई। मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ। अच्छा, आने वाले समय में गली गली में नीला रंग लहरा देंगे, दुश्मनों को अपने कदमों पर गिरा देंगे, ऐसा शक्तिशाली बनाएंगे कि भारत में भी भीम राज्य बना देंगे। थैंक यू अंगद भैया। राइट, आप सभी भाइयों से उम्मीद भी है ऐसी। हाँ दीदी। अच्छा, मैं तो सोच रही थी भारती भाई लग रहा है कि नाराज हो गए हैं, दिखे नहीं सुबह से, कहाँ हैं, मुझे लगा कि कॉलेज चले गए हो। मैं अपना घर का राशन कार्ड खुद से बनवाया हूँ दीदी। अच्छी बात है ना भाई। हम लोगों का तो कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं बहुत प्रयास किया था। दीदी जी आपके इधर तो बच्चे कवा उड़ा खरहा उड़ खेल रहे। कौवा उड़ खरहा हम लोग भी बचपन में खेले हैं भैया। स्कूल में खेलते थे, जब टीचर नहीं रहते थे तो खेल लेते थे हम लोग भी, खरहा उड़ कौवा उड़। मैं अपने बच्चों से एक दिन बताई, वो बोल रहे हैं मम्मी कोई खरहा उड़ता है क्या, मैंने बताया फिर कैसे कैसे खेलते हैं, तो लोग हंसने लग गए। गांव में अभी वैसे ही बच्चे खेलते हैं भैया, मिट्टी धूल में, खरहा उड़ कौवा उड़, गुल्ली डंडा, क्या क्या। तब जाकर मैं राशन कार्ड बना है। चलो भाई कोई बात नहीं है, आपका प्रयास सफल रहा ना। और जो प्रयास कर रहे हैं उनका हो भी नहीं रहा, उनसे पूछो। मैं पापा को हमेशा बोलता था लेकिन बनवाए नहीं थे। हम लोगों का कुछ भी नहीं है भारती भाई, नहीं यही है ना गांव में ही है, गांव में भी नहीं बना। बोले आपके घर में लोग जॉब करते हैं, गांव में कुछ भी हम लोगों को सुविधा नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना सिलेंडर ना लेटरिन बाथरूम, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। गांव में कुछ भी नहीं ना यहीं पे। दिल्ली में एक सुविधा मिली है केजरीवाल से, ईडब्ल्यूएस के तहत के माध्यम से बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ बस, और बाकी कुछ भी नहीं। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। मैं अपना अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करता हूँ। संघर्ष देखो भाई सब करते हैं, संघर्ष सब करते हैं। अगर किसी के घर में कोई एक जॉब करता है ना तो उसका सारा चीज बस, नहीं आपके घर में तो गाड़ी है, आपके घर में ये है, ये ऐसे ऐसे बोल के कहाँ कोई चीज देते हैं, कुछ भी नहीं। तो इंसान क्या संघर्ष करेगा।
और ज़रूरत पड़ने पर स्टाफ को भी सबक सिखाने का काम करता हूँ। अच्छा, हमारे सभी भाई बहादुर हैं। ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ते रहो आप लोग। मैं सभी चीज़ों का सबूत लेकर जाता हूँ। अच्छी बात है ना भारती भाई। दीदी जी जो ऐसे बोलते हैं तो सीधा ब्लॉक और जिला पर जाके कंप्लेन करो, फिर सब लोग जल्द से जल्द काम करेंगे। नहीं करते हैं अंगद भैया। मैं बताऊं ना, मेरे ससुर जी गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड तो प्राइवेट ही करते हैं। गांव में पापा का नहीं बना तो हमने सोचा कि हमारी फैमिली अलग है, हमारे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड और हम। हमने सोचा हम लोग अपना अलग करवा लेते हैं। तो हमने एक बार अपना अप्लाई किया जाके, हमारा कार्ड बन गया गांव में। फिर उसके बाद एक बार हमने राशन उठाया, दोबारा गए, बोले कि नहीं, आपके घर पे जांच गई थी, आपके घर पे 3-3 गाड़ियां हैं, आपके घर में किस चीज़ की कमी है, सब लोग कमाते हैं, इतनी आमदनी है, राशन कार्ड हम लोगों को काट दिया गया। हम लोग फिर दिल्ली आ गए। फिर दोबारा हम हस्बैंड बोले तो बोला नहीं हो पाएगा आपका, जाके वहां से पता न कहाँ से काम करवाओ। मैंने कहा छोड़ो फिर। ऐसे करते हैं भैया, रिझाते हैं बहुत। हमारे गांव में किसी का नहीं कार्ड है, 1-2 लोगों को है जो बहुत गरीब है उन्हीं का। बाकी 20-25 घर हैं जो हमारे गांव में, सब लोग यहीं रहते हैं। गांव में शादी ब्याह करते हैं, पढ़ते तभी जाते हैं, तो किसी के पास नहीं है। जय भीम सोनू भैया, जय भीम, स्वागत है आपका। सो जाओ आप, नाइट ड्यूटी करके आए हो ना। हमारे गांव में ये गरीब थे, उनको नहीं दिया, बहुत गरीब थे, उनके कोई कमाने वाला नहीं था, उनके हस्बैंड भी नहीं थे, एक बेटी थी। तो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उनकी बेटी का शादी किया और उनका एक कमरा बनाया, पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोन पापड़ी भाई उर्फ मंगरू भाई। आप कैसे हैं सोन पापड़ी भाई? बेटियां तो चली गई नाम बिगाड़ बिगाड़ के स्कूल। आपका खाना पीना हो गया सोन पापड़ी भाई उर्फ मंगरू भाई? सरकार तो सबके लिए सुविधा देती है, पर यह लोग नहीं देते हैं। उस जगह में रहता तो दिमाग ठिकाने से टाइम नहीं लगता। सच्ची है भैया, बता रही हूँ, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। एक हमारे गांव में प्रधान जी हुए थे, यादव समाज से थे, तो उनको कुछ मनवादियों ने, वो बहुत सीधे साधे थे, वो मतलब सबके बहुत अच्छा काम करते थे। तो कुछ मनवादियों ने उनको रात में ही उनको मार दिया, बहुत मार दिया था उनको। कितने दिन, 5-6 दिन तक कोमा में थे, फिर उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे लोग करते हैं। लेकिन इस टाइम एक हमारे गांव में उस सिंह हैं, प्रधान हुए हैं, वो काम किए हैं। जितने हमारे गरीब थे गांव में, उनको सबको सुविधा दिए हैं कुछ न कुछ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो ऐसे लोग खा पी लेते हैं भैया, नहीं करते हैं बहुत लोग। जो समझदार अच्छे होते हैं, जिनके अंदर कुछ दया होती है, वो करते हैं। आपके गांव का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है दीदी। खराब नहीं है भाई, बस यही है ना, सब लोग अपने में सक्षम है, कमा खा रहे हैं। अगर वो जैसे देते नहीं है वैसे कोई सिफारिश भी नहीं करने जाता है। सब लोग अपना कमाते खाते हैं, बोलते हैं ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए। 2 4 10 घर हैं जो थोड़ा सा, जो गांव में ही रहते हैं, थोड़ी सी गरीबी उन लोगों की है, बाकी तो सब लोग अपना अपना कमा खा रहे हैं भाई। जय भीम मोलू भाई उर्फ मगरमच्छ भाई चुलू। मोलू ये नाम कहाँ से आ गया? अच्छा, जिस दिन आपकी और पूजा सिस्टर की डिबेट चल रही थी, शायद सोनू भैया सुन रहे थे। हमारे गांव की स्थिति खराब पहले थी, अब नहीं है भारती भाई। एक बार हमारे गांव में भी हमारे कास्ट और बड़े कास्ट में झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। तब से लोग डरते हैं, नहीं बोलते हैं कुछ अब। जो अपने अधिकार को ये सोचते हैं कि ये सब छोड़ो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है दीदी। इसलिए भाई ना, छोड़ो वाली बात नहीं है। पहली बात, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं दिल्ली में, है ना भैया? ये तो सारे लोग गवर्नमेंट ही जॉब किए थे अपने गांव में, जो सारे हैं। तो इसलिए उनको वैसे भी सरकारी सुविधा नहीं मिल सकती, इसीलिए वो लोग प्रयास भी नहीं करते। इसमें हमारी गलती है दीदी जी। हम लोगों को यह बात चुनाव के समय सोचना चाहिए, पर हमारे लोग दारू मुर्गा की पार्टी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। रात रात की पेटी गांव में आ जाती है, खोलो पियो खाओ, फिर सुबह क्या होगा देखा जाएगा। ऐसे होते हैं, बहुत जगह होते हैं। खाने पीने वालों की जनसंख्या ज्यादा है। कौन सी फोटो? पासपोर्ट साइज? देखना यहाँ, इस पे, उसके नीचे देखना। इसी थैले में, येलो वाले में तो बहुत सारी फोटो थी। मेरी चाहिए ना? हाँ हाँ, मेरे पर्स में भी किसी होगी आपकी फोटो, 2 3 थी। कौन सी पर्स में, ये नहीं याद आ रहा। और जितने भी सरकारी लाभ है उसकी जरूर लेना चाहिए, जितने भी। नहीं मिल सकती ना भाई, सबको नहीं मिल सकती ना। इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से होता है ना। जिसमें छोटी श्रेया की थी उसी में थी आपकी भी फोटो। हाँ देखना, वो नहीं, ज्यादा वाली थी वो तो सिर्फ श्रेया छोटी की है। आमदनी के हिसाब से बनता ना भाई सारी चीजें। अपने गांव में सबसे गरीब हम हैं, जब हमको नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। दीदी जी उस समय रात में 10 कट्ठा बेच देते हैं और सुबह होते ही जेब में फूटी कौड़ी नहीं मिलती। सही बात है भैया, नहीं मिला ना। इसमें सिर्फ छोटू श्रेया की। अरे ये येलो वाला बैग मुझे देना, मैं निकाल के देती हूँ। इसी में है ये वाला, हाँ रेड वाली फाइल में आपने देखना, सिर्फ सारी फोटो ही है पासपोर्ट वाली। हाँ, ठीक है सही, लेकिन मिल नहीं रही ना। एक ही चाहिए? इसमें? 2 में इधर लो, इसमें? देना हमें, एक ये रेड है। वो हमें दो, सिर्फ वही दो।
एक ही चाहिए ना, मिला, इसको रख दो उसी जगह पे। मेरे पर्स में भी होगा 2-3 फोटो। अच्छा एक चीज है, जय भीम बहन, दिल से जय भीम भैया, प्रमोद भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। लाइक कर दिया, थैंक यू भैया, थैंक यू। आवाज बंद है, हाँ भैया कुछ बात हो रही थी। प्रणय मोहन, जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम। चलो दीदी जी, लाइव के देख रेख और कमेंट के तहत चलता हूँ। कुछ ही पल में हम पहुँचने वाला हूँ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आजमगढ़ में। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी, थैंक यू सो मच भैया जी। जाइए आप आराम से, थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रमोद भैया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? अंगद भैया, आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपका खाना पीना हुआ प्रमोद भैया जी? आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? प्रणय भैया कहाँ चले गए आप? दीदी नागपुर, अच्छा नागपुर से हैं भैया आप। बाय 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 भैया, बाय 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 प्रमोद बड़े भैया जी। और हमारे तरफ से सभी भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इतिहास, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय मूल निवासी। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे आप सभी के ऊपर। हमारे अंगद भैया जी की तरफ से सभी भाई बहनों को थैंक यू भैया, अंगद भैया थैंक यू सो मच, सेम टू यू। थोड़ा काम चालू है, ओके प्रमोद बड़े भैया जी, कोई बात नहीं है, काम करवा लीजिए आप, मुझे पता है अभी आपके घर का काम चल रहा है, काम पे ध्यान दीजिए भैया, कोई बात नहीं है। बाय बाय भैया, बाय बाय।
अंगद भैया बाय बाय, थैंक यू। मेरी मम्मी को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोड़ रहा था दीदी। मैं इंदिरा सहायक को चैनल अच्छा मिला है आपको भारती भाई? आपके मम्मी को घर में मिला है आपको इंदिरा आवास? मेरे मम्मी यहाँ मेरे दादी के नाम पे मिला है, बाकी किसी के नाम पे नहीं मिला है। चैलेंज कर दिया हूँ कि यदि मेरा नहीं मिलेगा तो मैं किसी के नहीं मिलने दूंगा। सही बात है भाई, सीधे नहीं कुछ काम हो रहा है। अभी तो नाम ही जुड़वाने के लिए बोला था दीदी। अच्छा भाई, उसके बाद इंदिरा सहायक मुझे अकेला में बुलाया और बोला कि टेंशन मत लो, ऐसा मत करना, मैं दिलवाऊंगा। अच्छा भाई,
मेरे पास सभी को सबूत रखा हूँ कि इन सभी को किस आधार पर जोड़ रहे हैं और मुझे किस आधार पर मना कर रहे हैं। एक मिनट पढ़ रही हूँ भाई, सॉन्ग चल रहा है गली में। मैं ऑनलाइन पूरा लिस्ट निकाल कर रखा था और इंदिरा सहायक को दिखा दिया पूरा सबूत के साथ। मैं जब दिखाया तो उसका होश उड़ गया कि कैसे ये सभी लिस्ट को निकाल लिया। अच्छा भाई। मेरा राशन कार्ड भी नहीं बन रहा था। लेकिन फिर बनाने पड़ा। बन गया ना भाई। राशन मिल भी रहा है दीदी। ओके भाई, अच्छी बात है फिर। मेरे पापा सपोर्ट करते और मैं फ्रंट पर जाकर काम करता। गुड मॉर्निंग अनमोल भैया, मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम, कैसे हो आप? भारती भैया जय भीम। मेरा तो सिर्फ स्टाफ से बात करना होता है। अच्छा भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अनमोल भैया जी। ठंडा लग रहा है क्या आपको?
आपको गर्मी लग रही है क्या भैया, बताना, मुझे तो ठंडा लग रहा है। आप कैसे हैं अनमोल भैया? आपका खाना पीना हो गया है भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। ठीक हूँ, खाना पीना खा के ड्यूटी आ गया हूँ। अच्छा भैया, मुझे मत ढूंढो इस दुनिया की तन्हाइयों में, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ हवा किधर से आ रहा है मेरे रजाई में। अच्छा, आप लोगों को तो गर्मी लग रही है तभी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे सच में ठंडा लग रहा है, क्योंकि मैं छत पे धूप में बहुत कम जाती हूँ, सिर में दर्द होने लगता है धूप में बैठती हूँ। मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ठंडा। अच्छा भैया, हम तो सोचे आपको गर्मी लग रही है, फिर बर्फ वाले पानी से नहाने के लिए बोलती। मैं भी कंबल के अंदर हूँ दीदी। अच्छा भाई, आपको भी ठंडा लग रहा हमारे तरह, इसका मतलब। सिर्फ अनमोल भैया को नहीं लग रहा। अनमोल भैया क्या खा लिए हो आज? पगली नहीं आई थी लाइव में दीदी? नहीं भाई, कुछ नहीं, रोटी सब्जी खा के आया हूँ। अच्छा भैया, हम तो सोचे स्पेशल कुछ खा लिए हो। स्पेशल समझे कि नहीं? अभी मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने। लाइक, थैंक्स भैया, थैंक्स। खाना खाने जा रहे हो? खा के आओ भारती भाई। अरे भाई, इसमें खाना खाने में इजाजत क्या है, बताओ? खाना खा के आओ, पहले खाना खाओ। जाओ जल्दी, फास्ट। मैं यहीं से बैठ के देखती हूँ क्या क्या खा रहे हो। मैं चला जाता हूँ खाना खाने, लेकिन आप तब तक लाइव ही बंद कर देती हैं। नहीं बंद करूंगी, ऑन करके ऐसे रख रही हूँ, तब तक मैं भी जा रही हूँ कुछ खाओ क्या हूँ। कुछ खाऊंगी तभी बोलूंगी। मैं आता हूँ 45 घंटे में। 45 घंटे में आओगे? चलो ठीक है। मैं तो खाना खाकर और लेकर भी आया हूँ। अच्छा भैया, कितना खाते हो? थोड़ा कम ही खाया करो भैया। सारी गलती से लिखा गया। अच्छा, कल भी गलती से लिखा गया था 30 घंटे में आता हूँ, आज 45 घंटे में। मतलब 2 दिन पूरा होने हैं, तीसरे दिन में 1 घंटे। हम्म, सच में दीदी, थोड़ा सा ही खा अच्छा भैया, थोड़ा सा खाते हैं। खाया करो भैया, थोड़ा सा ही क्यों खाते हो? काम करना होता है, हम लोग तो घर में बैठ के कुछ भी बोल लेते हैं। देखिएगा मुझे, मैं कितना मोटा हूँ। हाँ, मैंने आपकी एक वीडियो देखा था, जो सिर से टोटी लगा के खोल के पानी पी रहे थे।
वो आप ही की वीडियो थी ना भैया, बताना अनमोल भैया। बहुत तो वीडियो बच्चों के डाल रखे हो, लाठी डंडे चलाते हुए। अच्छा, कमेंट नहीं देखे थे क्या? ये लाइव बंद कर दिया आज तो मैं कल से आपके लाइव में नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं है, नहीं आओगे। मैंने भी देखा है आपका घर, पैर और पकड़ के रोड पे घिसरा दूंगी। मैं तो आपको देखा ही नहीं हूँ अनमोल भैया। हाँ मैं ही था। अच्छा भैया, नहीं बंद करूंगी भाई, ऑन करके रख रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ, कुछ फ्रूट व्रूट खा लूँ थोड़ा बहुत। मई में आऊंगा, पटना देख लीजिएगा। फिर मैं रोड पे छटपटाने लगूंगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, और जोर जोर से रोने लगूंगा। आपसे पहले मैं ही रो दूंगी। अभी तो मुंबई जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। अच्छा भैया, मुंबई क्या कोई जॉब वॉब मिल रही है? कोई जॉब मिल रही है क्या भैया मुंबई में आपको? भारती भाई, हमको भी कोई जॉब दिला दो, हम भी काम करेंगे। यूट्यूब चलाने का मन नहीं होता है, पर पढ़े लिखे तो है नहीं, जॉब कहाँ से मिलेगी? जहाँ जॉब मिल रही है। जा का मतलब क्या भैया? मैं समझ ही नहीं पाई। जा कौन सा जॉब मिल रहा है? यूट्यूब। यूट्यूब का पैसा कहाँ रखेंगे आप? 3-3 4-4 अकाउंट खुलवाए हैं भैया उसी में। हाँ लिख रहा था। अच्छा, भाई और बहन में सिर्फ इतना ही फर्क है, जो रुलाकर चुप करे वो भाई है, और जो रुलाकर खुद रो पड़े वो बहन है। राइट, सही बात है भाई। भारती भाई सही बात है, आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है। मैं यहीं पर हूँ, मैं सभी पैसा ले लूंगा और जितना भी रुपया बचेगा वो सब दीदी को दे दूंगा। जब सब ले लोगे तो बचेगा ही क्या भाई, बताओ? बताओ, जब सभी में से ले लोगे तो बचेगा क्या? माइनस करके बताओ सभी में से। तभी ना, मैं रोज 10 रुपये मांगूंगा। अच्छा। मेरा भी एक अकाउंट ऐड कर दी लीजिएगा, क्योंकि आपके बैंक में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो जांच होने लगेगा और काले धन का केस लग अच्छा भैया, टैक्स भरना पड़ जाएगा ना? टैक्स से बचने के लिए आपका अकाउंट ऐड कर लेंगे। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी आपने दिमाग दिया हमें। थैंक यू बताने के लिए, ऐसे ही करेंगे भैया। दीदी 10 रुपये दो ना। सच में दे देती भारती भाई, बट मैं पेटीएम वगैरह कुछ नहीं चलाती, अभी तो मेरा कोई एक अकाउंट भी नहीं है दिल्ली में।
रह रही हूँ 14 साल से, अकाउंट अभी नहीं है मेरा। बताओ। चैनल में हस्बैंड का अकाउंट ऐड किया है। मैं पैसा लेने के बाद किया हूँ और रुपया आपको देने की बात किया हूँ दीदी। अच्छा, ठीक है भारती भाई, लेकिन मैं 4 अकाउंट लेकर क्या करूँगा? मेरे पास 0 अकाउंट है भाई, 0। मेरा कोई अकाउंट नहीं अभी है। आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सारा काम हस्बैंड करते हैं तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं अकाउंट की पड़ती है। अभी आता हूँ। ओके भैया। भारती भाई पहले जाओ खाना खा के आओ, मैं बात नहीं करूंगी अब। मेरा पास तो 4 बैंक का खाता है, मेरा भी 1-2 अकाउंट को ऐड कर देना दीदी। अभी बोलो भाई, अभी कर देती हूँ। जिसको जिसको बोलो ऐड करवाना है फास्ट। ओके दीदी, बिल्कुल। आप पहले खाना खा के आओ तब बात करूंगी, नहीं करूंगी। मैं भी म्यूट कर रही हूँ और कैमरा ऑफ। तब तक मैं भी फटाफट फ्रूट चट करूँ, उसके बाद फिर आऊंगी। तब पूछूंगी भारती भाई कितनी रोटी खाए। मैं भी नहीं बोलूंगा, मौन धारण कर लूंगा। अच्छा भाई। मौन धारण नहीं कर पाओगे ना, बहुत करोगे 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बाय 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 भाई, भारती भाई बाय बाय, थैंक्स, तब तक के लिए बाय बाय। भारती भाई आगे बताना कितनी रोटी खाए। वेटिंग समय 45 मिनट। कोई बात नहीं है, वेटिंग समय, तब तक वेट करेंगे। तब तक हम भी बिजी हो जाते हैं। बाय 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 बाय। ओके दीदी, जरूर बताऊंगा। ओके। अच्छा, बबलू भैया बोले ना, कल बोले थे बबलू भैया आए थे। सिस्टर मैं खाना खा के अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया, अब आएंगे पूछेंगे भैया कितना टाइम लग गया था खाना खाने में। बाय भाई बाय बाय। हूँ बाबा के मिशन पूरा कर मोरे बिरना हो।
जय भीम भैया, जय भीम। मोस्ट वेलकम है राहुल हरियाणा। राहुल भैया जी, मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? स्वागत है आपका। कहाँ से हो सिस्टर? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ भैया। आप बताइए कैसे हैं आप? मौज है सिस्टर, आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं भैया। खाना पीना हुआ? हाँ जी, एंड यू? मेरा भी हो गया भैया। मेरा भी हो गया है खाना पीना भैया। मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। थैंक यू सो मच। रिटर्न कर देना चाहिए। अच्छा, आपका चैनल है? ओके भैया, आप कमेंट डालिएगा वीडियो में, आपको रिटर्न कर दूंगी, ऐसी बात नहीं है भैया। आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं रिटर्न कर दूंगी। हाँ जी, ओके भैया, थैंक्स, रिटर्न कर देंगे। आप कमेंट छोड़ दीजिएगा। भारती भैया कहाँ गए? खाना खाने क्या? हाँ अनमोल भैया, खाना खाने गए भारती भाई। मैंने कमेंट कर दिया। ओके भैया, थैंक्स, मैं कर दूंगी आपको रिटर्न। एक दो घंटे बाद करूंगी, तुरंत करने से अनसब्सक्राइब हो जाएगा ना, फिर फायदा नहीं रहेगा। और बताओ फैमिली में सब कैसे? सब बढ़िया भैया, फैमिली में भी सब बढ़िया है। आप अपना बताइए, आपके फैमिली में सब लोग कैसे हैं? मैं भी जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो अनमोल भैया? आप दोनों भाई फिर तो अच्छी गेम खेलते हो। एक चले गए तो आप भी चले जाओ। हम भी मस्त हैं। ओके भैया, मस्त ही रहना चाहिए हमेशा। मैं तो बाय नहीं बोलूंगी अनमोल भैया। क्यों बोलूं? मैंने आपको जाने के लिए थोड़ी बोला है। हुई ना ये बात? और क्या हमने बोला आपको जाने के लिए बाय बोलो? आप खुद से बोले हो, खुद से बोल के चले जाओ। अभी तो थोड़ा सा खाली हूँ। अच्छा, थोड़ा सा खाली हो तभी तो बाय करके जा रहे हो। थोड़ा सा बिजी होते तो शायद क्या होता, कब के चले गए होते। कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब यही है अनमोल भैया आपका। बताओ, ये अकाउंट ऐड करवाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं भैया?
जब मरीज आ जाएंगे तो आप बाय बोलिए, चाहे मत बोलिएगा, मुझे तो जाना ही। अच्छा भैया, मरीज आ जाएंगे। आपकी क्लिनिक है क्या भैया, बताना। अनमोल भैया बताना प्लीज, कि किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं आप, कि अपना खुद का है, बताओ। कितना डॉलर हुआ? अभी तो 6-7 दिन हुए मोनेटाइज हुए चैनल, डॉलर कहाँ से कंप्लीट होगा? इतना जल्दी डॉलर कहाँ से कंप्लीट हो गया? ये भी तो 4-5 दिन हुआ मोनेटाइज हुआ चैनल। क्यों बताऊं, फ्री में इलाज कराने आ जाएंगी तब। अच्छा, कंजूस भाई कहीं के। इतनी कंजूसी। इतनी कंजूसी भैया, पहली बार देखा है। बताओ, इतनी बड़ी कंजूस भाई पहली बार देखा है। कंजूस नहीं हूँ। फिर क्या हो? फिर क्या हो भैया, बताओ। बोल तो रहे हो ना फ्री में इलाज कराने आ जाओगी तो। बहुत दानी हूँ मैं तो। अच्छा, दानी हो भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। माधवी कुमारी दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका दीदी, कैसी हो आप? दानी हो भैया, आज के बाद दानी भैया बुलाएंगे, नाम नहीं लेंगे। दानी भैया, दानी भैया। वैसे भी हमारे लाइफ में सबका नाम चेंज है। मानवी दीदी, जय भीम। कहाँ चली गई जय भीम बोल के? दानी भैया चले गए क्या? किधर चले दानी भैया? सुपर चैट किया हूँ, नहीं आया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आया। आता तो स्क्रीन पे दिखाता ना भैया। काउंट भी नहीं हुआ। मेरा पैसा कट गया, झूठ। दानी भैया झूठ। अच्छा, 20 रुपए कट गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो दीदी? मानवी दीदी, मैं भी ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव में जुड़ने के लिए। खाना पीना हुआ आपका? सच में किया हूँ दीदी। अनमोल ही बोलो। ना ना ना। नो, नो, हमारी बेटी कर रही थी ना कल नाम चेंज करने के लिए आपको। आपने समझो खुद ही चेंज कर दिया है।
हमारी बेटी सबका नाम बहुत अच्छा अच्छा रखती है। जय भीम नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम है परवीन भैया जी। जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है। कैसे हो आप? नहीं गया होगा तो वापस मुझे आ जाएगा। हाँ, तब कहाँ इतनी फिक्र कर रहे हो? बोलो दानी भैया। लाइक कर दिया है। ओके भैया, थैंक्स। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? परवीन बड़े भैया जी आप बताओ आप कैसे हो? जय भीम जय भीम जय भीम। मानवी दीदी, इंजेक्शन लगा दूंगा, नाम चेंज करेंगी तो सोच लीजिएगा। नहीं डरती है, इंजेक्शन से नहीं डरेगी। ये जो छोटी वाली ना बहुत लड़ाकू है, डरती नहीं है। बड़ी वाली को बेशक डरा सकते हो क्योंकि वो रोती है ज्यादा। छोटी वाली तो लड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं डरेगी आपसे। आप जो बोलोगे उसका उल्टा ही बोलेगी आपको। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। मानवी दीदी थैंक यू बड़े भैया जी। परवीन बड़े भैया जी थैंक यू सो मच। हम ठीक हैं, आप बताइए। मैं भी भैया बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं ठीक हूँ। बीच बीच में हो जाती हूँ परेशान, फिर सोचने लग जाती हूँ। जब ठीक हो जाती हूँ थोड़ा तो अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। जय भीम मानवी दीदी, जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय सतनाम बहन, जय भीम नमो बुद्धाय। ओशन बड़े भैया जी मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो? कैसे हो बड़े भैया जी? दोबारा कर रहा हूँ, तीर और लिख रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा होगा भैया, लगा था मुझे जुकाम होगा। अच्छा, जब आप डॉक्टर खुद हैं तो फिर इलाज तो स्वयं से हो सकता है, जुकाम की कोई फिक्र नहीं है। फोन ऑन कर रखा है। ओके बड़े भैया जी, मैं अच्छी हूँ कंचन बहन। ओके ओशन भैया, अच्छा ही रहना चाहिए। और बताइए खाना पीना हुआ आपका? खाना पीना हो गया बड़े भैया जी? मुझे भी ज्वाइन करवा दीजिए, नहीं तो ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा, ब्लॉक कर दूं आपको? ऐसा ना बोलिए भैया, ब्लॉक काहे कर दूंगी। आप कैसी हो कंचन बहन? मैं ठीक हूँ भैया, आप सबके आशीर्वाद से बढ़िया हूँ। बीच में देखे ही थे स्वास्थ्य खराब था, अब बिल्कुल अच्छी हूँ भैया। ऑन कोई बात नहीं है बड़े भैया जी, आप ऑन नहीं रहेंगे तो भी आप अपने गाड़ी चला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हो गया बहन। ओके भैया। और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं ओशन भैया? आज आप हमारी लाइव में एक हफ्ते बाद आए हो, कहीं बिजी थे क्या भैया? मैं भी लाइव करूंगा, अगर कोई नहीं आएगा तो सबको ब्लॉक करूंगा। अच्छा भैया, कब कर रहे हो बताओ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, क्योंकि दानी भैया को फिर आवश्यकता क्या है पैसे की बताओ? गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, दानी लोगों को थोड़ी नहीं, जैसे हम गरीब हैं। जैसे हम गरीब हैं भैया, आप जैसे दानी भाइयों की पैसे की क्या आवश्यकता है? क्या बात है बहन।
ऑन हूँ। ओके भैया ओके, मैं खुद ही गरीब हूँ। नो। ओशन भैया जी, घर में सब लोग कैसे हैं? बात कुछ नहीं है भैया, बस एक उम्मीद होती है भैया लोग कहाँ हैं, तब हम लोग जान जाते हैं किसी काम में बिजी हैं, नहीं आ रहे हैं। कोई मुझे भी ज्वाइन कर लीजिए, गरीबों की दुआ लगेगी। नहीं, मैंने किसी के लाइव में देखा था, किसी ने, हाँ किसी ने बोला ना कि आप मुझको ज्वाइन कर लो, आपको भगवान ज्वाइन करेंगे। किसी सिस्टर ने बोला था। मैं किसी के लाइव में गई थी, वहां पे कमेंट देखा था, वो मुझको नहीं बोली थी, किसी और से बोल रही थी कि मुझको भी ज्वाइन कर लो, आपको भगवान ज्वाइन करेंगे। घर परिवार में सब बढ़िया हैं। ओके बढ़िया, बढ़िया ही रहना चाहिए बड़े भैया जी। ड्यूटी हो ओशन भैया आप? ओशन भैया आप ड्यूटी हो? सोनू भैया आप ही के लाइव में हुआ था ना ऐसा? सही बात है, याद दिला दिए। थैंक यू थैंक यू। दानी भैया थैंक यू। हमको ज्वाइन करो, आपको भगवान ज्वाइन करेगा। हाँ सोनू भैया, आप ही के लाइव में कोई बोल रहा था, तब मैं उस टाइम वहां थी। आप सोए नहीं, अभी लाइव ही हो, देख रहे हो? थैंक यू सो मच सभी भाइयों को। आप फेसबुक चलाती हैं क्या? अरे नहीं मेरे भैया, ना तो फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाती। यूट्यूब तो चलाया नहीं जा रहा, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाएंगे हम। ऑन। ओके भैया थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं चलाते हैं दानी भैया, सिर्फ यूट्यूब चलाते हैं। नहीं बहन, बेलदारी काम करता हूँ। कोई बात नहीं भैया, काम कोई भी हो, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। थैंक्स भैया, ओशन भैया, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही बोल रहा था, उसके बाद राजू भैया। अच्छा, वही तो कह रही, मैं लाइव में देखी थी, किसी की याद नहीं आ रहा था किसके लाइव में। दानी बोलेंगी तो नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ। मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। अनमोल भैया आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, आपका नाम मैंने थोड़ी खराब किया है। सोनू भाई को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। प्रवीण भैया जी कैसे हैं आप? सोनू भैया बोल रहे हैं। दानी भैया मैंने आपका नहीं बिगाड़ा नाम, आपने खुद बिगाड़ा है। और बताइए कैसे हो भाई आप? मैंने नाम नहीं बिगाड़ा है, हम ठीक हैं। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। तो दानी नाम थोड़ी है, आप कंजूस बोली है तो मैं धोनी बोल दिया। इसका मतलब दानी नाम थोड़ी हुआ, बक जाता नहीं अब। बक जाता नहीं अब, नहीं भैया जाओ ना। नहीं बोलेंगे अब दानी भैया, अनमोल भैया ही बुलाएंगे, सॉरी। अनमोल भैया ही बुलाएंगे, दानी भैया नहीं बुलाएंगे।
सोनू भैया बोलो, खाना पीना कुछ हुआ कि नहीं अभी? 30 नंबर पर लाइक किया। ओके भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त हैं। ओके सोनू भैया, मस्त रहना चाहिए। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी? खा लिया हूँ। अच्छा, आज तो खाना खा लिए। टाइम क्या हो रहा है? 11:48। ड्यूटी जाओगे 3 बजे, 1 बजे? ड्यूटी कब जाना है? ऑन। ओके बड़े भैया जी। अनमोल तो यूट्यूब वाले ने नाम रख दिया, वैसे मेरा नाम अनमोल भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है बताओ फिर भैया, नाम बताओ अपना। 3। अच्छा, 3 बजे जाओगे? 3 बजे जाओगे, 3 बजे सुबह आओगे? अच्छी ड्यूटी है। क्या नाम है अनमोल भैया? अनमोल नाम है। झूठ भी बोलते हो। होम थिएटर चल रहा है बहन घर के पास। अच्छा भैया। कंचन दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुमलता। मेरा नाम है कुसुमलता। सोनू भैया, आपका क्या नाम है? सोनू भैया का नाम सुन पापड़ी। सोन पापड़ी नाम है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ भैया, जब चल रहा तो फिर कैसे सुनाई देगा आपको? आवाज तेज होती है ना उसकी। चश्मा कहाँ है? आज चश्मा लगाई थी, रख दिया निकाल के। अब तक लगाई थी, देखी नहीं क्या? वही नोटिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ध्यान लगा रखे वो चश्मा कहाँ हमारा है। हम्म। ओन। ओके भैया, थैंक्स। थैंक्स परवीन भैया। मेरा नाम पता चला अनमोल भैया? मेरे डर से निकाल के छुपा दी क्या? आप लगा लीजिए, नहीं चुरा लूंगा। कोई बात नहीं है भैया, अगर आपको चश्मा पसंद है तो ले जाओ, चुराने की क्या आवश्यकता है। वैसे दे देंगे। आपकी तरह कंजूसी थोड़ी करते हैं। मैं चोर नहीं, मैंने तो आपको चोर नहीं बोला है। आप खुद बोल रहे हो अपने से। मैंने थोड़ी बोला है। आप दानी है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं दानी तो नहीं हूँ। ये नहीं है, मैं दानी नहीं हूँ। एक इंसान हूँ, इंसान।
इंसान जानते हो ना। वैसे आप अपने मुंह से कुछ भी बोलो, अगर हम बोल देंगे अभी ना, बोलोगे हमने ऐसा थोड़ी बोला था तुमको कहने के लिए। आप कुछ भी बोलो अपने मुंह से, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। हो गया काम? ऑनलाइन करवाए हो? क्या? वही चीज। और हाल चाल? मैं अपने आप को कुछ भी बोल दूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। मैं तो जरूर बोलूंगा, पक्का। बहुत टाइम। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू। 4-5 दिन हो गए, सारा निकलता है ना। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच। बाय बाय भैया, बाय बाय। अनमोल भैया बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आया, बहुत हंसाया, एंजॉय किया दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसका फोन था? रुलाता भी हूँ, अब नहीं रोने वाले हैं। अनमोल भैया अब रोने वाले थोड़ी हैं। गुस्सा आ जाता है बट रोते नहीं है। गुस्सा भी दिला। कोई बात नहीं, उतना चलता है। उतना चलता है। सर्व गुण संपन्न, मतलब आप सभी गुणों में संपन्न हो। कूड़े वाली गाड़ी आ रही है।
झगड़ा भी करता हूँ और झगड़ा एक दूसरे में लगाता हूँ। एक दूसरे में झगड़ा लगाने वाले को क्या बोलते हैं भैया? अनमोल भैया बताना। जो एक दूसरे में झगड़ा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी फास्ट क्या बोलते हैं? शकुनी। अच्छा आग आग लगावन। अब पता चला कि आप कॉमेडियन भी हैं। आप एक कॉमेडियन भी हैं। आग लगावन, हाँ सही में गांव में ऐसे ही नहीं लोग बोलते हैं आग लगावन। पर ये काम तो औरतें ज्यादा करती हैं भैया, जेंट्स थोड़ी करते हैं। अनमोल भैया ये सब काम तो जेंट्स नहीं करते हैं, लेडीज करती हैं आग लगावन का काम। आप कैसे सीख लिए? कोर्स वोर्स किए हो क्या? आग लगाने वाला कोर्स कहाँ से किए हो भैया बताना। रुलाता भी हूँ। मैं भी सीख गया हूँ। अच्छा मैं भी सीख गया हूँ। सीख गए हो? कहाँ से सीखे हो ये बताओ। हम तो सोचे अलग से कोई कोर्स किए हो रुलावन वाला। दिव्या शेखर दीदी जय भीम नमो बुद्धाय। अपने बहनों से सीखा हूँ। बहनों से सीखे हो? अच्छा भैया अब इल्जाम बहनों पे लगा दिए। इल्जाम बहनों पे लगा दिए। जय भीम जय भीम जय भीम दीदी दीदी। हाँ जी फोन। वो भी वाईटी वाले बहनों से। अच्छा वाईटी वाली बहनों से। वाईटी कौन सी हो भैया बताना। थैंक यू दिव्या दीदी थैंक यू। बड़े भैया जी थैंक यू सो मच। आप ऑन हैं, आप अपने ध्यान दीजिए प्लीज। गाड़ी उड़ी चलाते वक्त मुझे बहुत डर लगता है, आप ज्यादा तो ध्यान दीजिए। वाईटी वाले बहनों से। अच्छा भैया यूट्यूब वाली बहनों से। अच्छा यूट्यूब, सॉरी समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए सॉरी भैया। शॉर्टकट ज्यादा समझ में नहीं आता। थैंक यू। 45 मिनट नहीं हुआ भारती भाई का क्या लग रहा? खाना वाना बना के फिर खाएंगे क्या?
मेरी बहन नहीं है, 3 भाई हैं बस, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा भैया, हमको बना लो ना बहन, फिर आपको लूटने के लिए तो फिर हम ही हैं। कितने भाई कंजूस हैं, बहनों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं हम छोटे हैं। कम से कम आप तो बड़े तो बताए। बहुत भाई है ना जो बोलते हैं हम छोटे हैं, छोटे हैं। ऑन है, ओके भैया, थैंक्स। सभी भाइयों में एक ही परवीन भैया बड़े हैं, पैसा दो। पैसा बड़ों को थोड़े दिया जाता है, छोटों को दिया जाता है। छोटे को दिया जाता है, बड़ों को नहीं दिया जाता है। पैसा तो छोटों को दिया जाता है भैया। बताओ, आप तो बड़े हो ना, खुद के पैर पे खड़े हो। आपको पैसे की क्या आवश्यकता, आपको बहनों को पैसे देना चाहिए। मुझे देखकर आपको क्या लगता है मैं आपसे बड़ा हूँ? मैं आपसे बड़ी हूँ? चलो, आपकी हाइट कितनी है बताओ, फास्ट बताओ, आपकी हाइट कितनी है? आप पढ़ाई में भी मेरे से आगे हो, हाइट में भी मेरे से आगे हो, माइंड में भी मेरे से आगे हो। आपके बच्चे मेरे बराबर होंगे। अच्छा, ऐसी बात है। 3 फुट का। अच्छा। सच में कॉमेडी अच्छी कर लेते हो भैया। 3 फुट का हूँ, अच्छा। फिर भी मैं आपसे आधा फुट छोटी ही हूँ। उम्र में भी छोटा हूँ, अच्छा। कोई बात नहीं है, पर भाई हो ना, बहनों से पैसा थोड़ी लेते हैं। भाई कभी देखे हो बहनों से लेते हैं पैसा? भाई छोटा हो बड़ा हो, हमेशा बहन को ही देते हैं। नहीं, भाई को देते हुए देखा हूँ, नहीं बहन को। अच्छा, सही बात है। जहाँ देने की बारी आई वहां प्रूफ देना पड़ता है आपको। चलो ठीक है, हम फोटो भेज देंगे, भारती भाई आपको दिखा देंगे। प्रूफ ही चाहिए ना, प्रूफ चाहिए, प्रूफ भी मिल जाएगा। तब तो यकीन होगा कि नहीं होगा बताओ? मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को देता हूँ और मम्मी को, अच्छा, बहनों को नहीं। अच्छी बात है, सबसे पहले किसी को दो या ना दो, मम्मी को जरूर देना चाहिए।
जय भीम नमो बुद्धा जय संविधान क्रांतिकारी नीला सलाम। सप्ता दीदी जय भीम नमो बुद्धा, स्वागत है आपका दीदी, कैसी हो आप? मेरी बहन ही नहीं है तो कहाँ से दूंगा दीदी? हम लोग बहन नहीं है भैया, देने की बात आई तो आप छोटे बन गए। हम लोग बहन नहीं है आपके। सप्ता दीदी कैसी हो बताओ? कैसी हो सप्ता दीदी? तो आप बड़ी हो ना। अच्छा, यहाँ बड़ा छोटा का बात आ गया। सिस्टर जी और कैसी हैं? खाना पीना आपका हो गया? नहीं दीदी, खाना पीना तो नहीं हुआ, बट मैं अच्छी हूँ। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। सोनू भैया देखो हमसे छोटे हैं, बट हमसे कभी नहीं पैसे मांगते हैं कि दो, और ना हमें देते ही हैं। सच में आप पहले बोले थे कंजूस, सही बोला था। ऊपर से आप बोले थे नहीं मैं कंजूस नहीं, मैं दानी हूँ। सोनू भैया बताओ, दानी लोग क्या करते हैं? सोनू भैया बताओ, दानी लोगों का काम क्या होता है? आप क्या ठंड को ज्यादा है क्या सिस्टर जी? हाँ दीदी, ठंड तो मुझे लग रही, पता नहीं किसी को लग रही या नहीं। कोई हमको भी दान कर दो। अच्छा, जो हमको देगा उसको एक काम करो सोनू भैया, भगवान के भरोसे रहते हो ना, जितना पैसा हो आप हमें ट्रांसफर कर दो, आपको भगवान दे देंगे उसका डबल करके। जल्दी करो सोनू भैया। घर वाले बोलते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो शादी करा दूंगा, और मैं तो अब अच्छे से चल भी दे फिर भी नहीं करा। अच्छा भैया, पैसा चाहिए कि रुपया? अच्छा, ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए, पैसे की गड्डी चाहिए, रुपए की। रुपया पैसा से थोड़ी काम, 25 पैसा 1 पैसा दे दोगे उससे क्या होगा बताओ? मेरा भी खाना पीना नहीं हुआ, मैं खाने जा रही हूँ सिस्टर जी। अच्छा दीदी, खाना खा लो। सत्ता दीदी बताना आपके चैनल का क्या हुआ, लाइव चालू हुआ कि नहीं अभी? सत्ता दीदी बताना, लाइव चालू हुआ आपके कि नहीं अभी? थैंक यू बड़े भैया जी, परवीन बड़े भैया जी, थैंक यू। क्या करेंगी पैसा? क्या करेंगी पैसे? पैसे का तो हर जगह भैया जरूरत है। पैसा है तो जिंदगी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बताओ, बिना पैसे का खाना खाते हो? मुझे बताना। जब पैसे की आवश्यकता नहीं, फिर जॉब क्यों करते हो भैया? पढ़ाई मत करो, जॉब मत करो। ये बोलो सिर्फ बहनों को गुमराह कर रहा हूँ। नहीं सिस्टर जी, अभी लाइव नहीं चालू हुआ, पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा। दीदी कोई जानकार है उससे पूछो, पैसे से मुर्गा आएगा। अच्छा, पैसे से मुर्गा आएगा? मुर्गा खाने में तो आप आगे है ही हो, इसमें दो राय कहाँ है। तो सीधा बोलो ना, खाना चाहिए कपड़ा चाहिए, पैसा क्या करोगी आप? अच्छा, खाना चाहिए कपड़ा चाहिए, तो बिना पैसे का आएगा भैया का? बताओ ना मुझे, कपड़ा खाना बिना पैसे का आ जाएगा? बाय बाय बड़े भैया जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपकी भी लाइव का टाइम 1 बजे है।
क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम सप्ता दीदी भारती भाई की तरफ से। सप्ता दीदी शायद चली गई, भारती भाई खाना खाने गई। आप कैसी हो सप्ता दीदी? भारती भाई बताना कितना टाइम लगा आपको? 45 मिनट हुआ कि उससे पहले आ गए? आपका खाना पीना हो गया सप्ता दीदी? सप्ता दीदी खाना खाने गई। मैं लेट कर दिया क्या दीदी? मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगा कि भारती भाई लग रहा खाना वाना बना रहे हैं अभी। आपको सब खरीदने में मेहनत लगेगा, सीधा मैं लेकर दे दूंगा। क्यों? घटिया घटिया कपड़ा दे दोगे तो हम ले लेंगे, हम अपने पसंद से लेंगे कि जहाँ हम 1000 रुपए लेंगे आप 100 रुपए हमें पकड़ा दोगे तो हम ले लेंगे। इसीलिए आपको कंजूस भाई बोला था। पहले मुझे ये बताओ कि मैं लेट कर दिया? नहीं भाई लेट तो नहीं, पता नहीं, समय नहीं देखा, समय का कुछ पता नहीं है कब गए थे। अपनी तो छोड़िए, भारती भैया भी बड़े हैं। भारती भाई तो मेरे से काफी छोटे हैं, बड़े कहाँ हैं भैया? भारती भाई तो मेरे से काफी छोटे हैं। भाई को पसंद को घटिया बोल रही हैं दीदी। बिल्कुल भाई, जब कंजूसी करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं एक बार की आपको बात बता रही हूँ भारती भाई। ऐसे रक्षाबंधन था, मेरे भैया पंजाब से घर गए थे। मेरे भैया मुझे बहुत मानते थे। पंजाब से घर गए थे, मैंने मुझसे बोले बताओ तुम क्या लोगी आज रक्षाबंधन है। मेरा तो बचपना था, मुझे इतना नहीं, तो मैं ना उनको बोला कि भैया मुझे येलो वाली बाली चाहिए। ये नहीं बोला भैया गोल्ड वाली चाहिए। मैं तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ रही थी। मैंने बोला भैया येलो वाली मुझे बाली चाहिए कान में पहनने के लिए, सब लोग पहनते हैं। तो भैया ने क्या बोला, अच्छा चल ठीक है तुझे येलो वाली चाहिए ना। वो गए 5 रुपए की कितनी की आई येलो वाली लेके आए। मैं खूब खुश हो गई। जब उसका 10-12 दिन के बाद कलर उतर गया, मैं अपनी मम्मी से बोली अम्मी भैया तो चले गए, ये कौन सी येलो वाली बाली ला दिए तो वाइट हो गई। तो मम्मी हंसने लग गई। फिर भैया से बताया, भैया बोले कि तेरी येलो वाली बाली तेरी शादी में देंगे। तो वही हाल है। हम्म। 1 मिनट मरीज आए हैं। ओके भैया, 1 मिनट नहीं, आप पूरा टाइम लो मरीज के साथ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा अनमोल भैया। जय भीम जय संविधान भाई। आपको प्रियंका दीदी जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत आपका हमारी लाइव में। कैसे हो? लाइक डॉन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? आप कैसी हो दीदी? क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला शराम प्रियंका दीदी भारती भाई बोल रहे हैं। आप कैसे हो दीदी? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रियंका दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? आप कैसी हो दीदी? भारती भाई बोल रहे हैं प्रियंका दीदी। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल। आपका खाना पीना हो गया है प्रियंका दीदी? प्रियंका दीदी खाना पीना हुआ आपका? भारती भाई पूछ रहे हैं। हाँ भाई हमारा खाना पीना हो गया, आप बताइए आप कैसे हो? भारती भाई बताओ आप कैसे हो? कलामियों के तीर हो
कलमिया के तीर और बाबा मोर चलवल कलमी के तीर। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत प्रियंका दीदी। बाबा मोर चलवल कलमी के तीर। अभी ये अंगड़ाई का झांकी है और अभी आगे पूरा हक अधिकार का लड़ाई बाकी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ प्रियंका दीदी। सॉरी भाई, कोई नीचे आ गया था, बेल बजा रहा था। सॉरी भारती भाई, कोई नीचे आ गया था इसलिए चली गई, बेल बजा रहा था। जय भीम जय भीम जय भीम भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू थैंक यू। खाना पीना खा लिए, थोड़ा सा आप लेट जाओ, रेस्ट कर लो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। प्रियंका दीदी चली गई क्या? हाँ भाई चली गई प्रियंका दीदी। दो कमेंट करके चली गई। कोई बात नहीं है भाई।
कोई बात नहीं। भारती भाई प्लेलिस्ट से आओ, फिर ऐड आएगा। 1 मिनट, आज मैं आपको बताती हूँ, आप इतनी आईडी चाहते हो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। प्लेलिस्ट से आओ। मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगे भाई? मैं देखा हूं, आकर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, क्यों नहीं पड़ता है बताओ? ऐड नहीं आता है? प्लेलिस्ट से आते तो ऐड नहीं आता है, बताओ। आता है कि नहीं आता, पहले बताओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ऐड आता है कि नहीं आता, पहले बताओ। मुझे पता है दीदी। अच्छा भाई, मुझे तो नहीं पता था, तब तो आपने एक बार भी नहीं बताया। जाकर ऐड आता है। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था भारती भाई। मुझे भी नहीं पता था, मुझे मंगरू भाई बताया था। मुझे भी सोनू भैया ही बताए थे। नाम भी अच्छा रखे हो। प्ले स्टोर से नहीं आता है दीदी, प्ले लिस्ट होता है ना, मैं देखा हूँ। अच्छा, प्ले लिस्ट। अच्छा, हमारी लाइव बबलू भैया को आप ही शेयर किए थे भारती भाई? बताना भारती भाई, बताना। क्या दीदी? मैं कह रही हूँ बबलू भैया को लाइव मेरी आप ही शेयर किए थे।
नहीं दीदी। अच्छा। क्या कोई बात है क्या? नहीं भैया, नहीं, खुद से आए हैं। अच्छा, मैं अनमोल भैया को शेयर किया था। कोई बात नहीं है भैया, भैया बहुत अच्छे हैं। पहली बार आए थे ना कल मेरे, मैं सोचा आपने शेयर किया था, इसलिए पूछा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बबलू भैया के बारे में बताओ। मुझे पता है दीदी बबलू भैया के बारे में, मैं आपको उसी दिन बताया था। ओके भारती भाई, ओके, थैंक्स। क्योंकि हम पहले से नहीं जानते ना बबलू भैया को, कि बबलू भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके भैया, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई बताने के लिए। मैं बबलू भैया को बोलूंगा कि आप मेरी कंचलता दीदी को बोल दिए कि मैं आता हूँ खाना खाकर, और अपने इंतजार में मेरी दीदी खाना भी नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं बोलना। ऐसा नहीं बोलना भारती भाई, मैं तो फिर लाइव एंड कर दी थी। मैं ऐसा ही बोल बोल सकते, कोई बात नहीं, भाई हैं वो, बुरा थोड़ी मानेंगे किसी बात को।
5 मिनट में आई भाई।
भीम भैया जी, जय भीम नमो बुद्धा। भीम आर्मी भैया जी, जय भीम नमो बुद्धा। सिस्टर भैया सभी लोग सॉरी, मैं दवाई खाना आज भूल गई थी। जल्दी जल्दी दवाई खाई, नहीं तो आज डांट सुनती पक्का। आज दवाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। खाना पीना हो गया पगली। सॉरी अंजू सिस्टर बहन, कैसी हो बहन बताओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी हो पगली, खाना पीना हो गया। लाइक डन। अरविंद बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका। कैसे हो भैया? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सिस्टर। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया। दीदी जी मेरा खाना पीना हो गया है। आप कैसे हैं अरविंद भैया जी? भारती कैसे हो अरविंद भैया पूछ रहे हैं। आपका खाना पीना हो गया अरविंद भैया? अरविंद भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम। पूजा सिस्टर बोल रही हैं। मैं ठीक हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए। मैं भी ठीक हूँ भारती भाई जी। अंजू बहन, अरविंद भैया बोल रहे हैं। थैंक यू भैया। मुझे लाइक करने का ज़रूरत नहीं है दीदी। मुझे पता है सिस्टर, मुझे पता है बहन। जय भीम भैया। अरविंद भैया जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्धम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्योंकि मेरे भाई कर दिए हैं, मोलू मोटू भाई जी। हाँ सिस्टर, मैं भी ठीक हूँ अरविंद भैया। भारती भाई एक बात बोलूं मैं? थैंक यू अरविंद भैया। भारती भाई एक बात बोलूं? बोलो। मैं ध्यान धारण किया हुआ हूँ। भारती भाई एक बात बोलूं? बोलो, लेकिन एक बात से ज्यादा नहीं होना चाहिए दीदी। कोई बात नहीं, एक ही बात बोलूंगी। जरा संजय भैया के लाइव में 5 मिनट के लिए जाना। अंजू घर आ गई कि नहीं? संजय बड़े भैया जो हैं बलिया के, उनके लाइव में 5 मिनट के लिए जाना। भाई मैं दूसरे आईडी से कमेंट करी, शो नहीं हो रहा है। जरा 5 मिनट के लिए जाना। क्या हुआ दीदी? जाओ तो पहले। जी भैया जी मैं आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ दीदी, बिल्कुल जाओ। क्योंकि आप जैसे भाइयों के ऐसे लोगों के बीच में जरूरत है, सभ्यता सिखानी चाहिए। भाई मुझे बहुत गुस्सा लगी, मैं 2-3 कमेंट किया लेकिन मेरा शो नहीं हुआ। मेरे उस पे ब्लू नहीं है शायद, भैया दिए थे हटा लिए हैं। कैसी हो अंजू सिस्टर? अरविंद भैया बोल रहे हैं। लाठी बरसाओ लाठी भाई पर दीदी। अरे नहीं सिस्टर, लाठी नहीं बरसाएंगे।
मैं ठीक हूँ भैया जी। दीदी मैं भी जा रही हूँ दीदी संजय भैया की लाइफ में। जाओ सिस्टर। हाँ चल तो 2 दिन से मजे कर रही हैं मामा के यहाँ जाकर। अच्छा भैया। टाटा नमक, डांडी नमक, सेंधा नमक, काला नमक, टाटा नमक, डांडी नमक, सेंधा नमक, काला नमक। ये क्या भैया, कोई चूर्ण पाउडर बना रहे हो क्या? अरविंद भैया बताना, कोई चूरन उरन बना रहे हो?